Today, in today's class, we are going to discuss the next topic of our motion in a straight line. We have started motion in a straight line, right? So the next topic in the more under the same chapter is equations of motion. Equations of motion. चलिए हम देखते हैं equations of motion बेटा. Equations of motion. So these equations of motion, if you study these equations of motion, under this we have the two concepts, that is horizontal motion as well as the vertical motion. So today we are going to discuss completely the horizontal motion. Try to understand, today we are going to discuss the horizontal motion, that is the motion along a horizontal line. Okay, inshallah in tomorrow's class we are going to discuss the vertical motion, that is motion along the vertical line. तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा same equations of motion, how to apply these equations of motion for the horizontal motion. ठीक है, चलिए बेटा equations of motion तो हम बाद में देखेंगे. पहले समझ जाइए कि भाई what for we are using the equations of motion, because maximum students they have a one small complaint, and I can say that is a common complaint, you know, sir, we know we can understand the question but we don't know where to apply which formula. How it is possible that how we should get that particular idea to see the question immediately after seeing the question, तो which formula we have to use. तो ये जनरल एक प्रॉब्लम होती है बेटा. तो यहाँ पे it is not necessary that whatever the equations of motion what we are going to study, if I apply the second equation, you have to apply the second equation. No, it's not like that. Are you getting my point? So if you are perfect, if you make yourself perfect, I can say, then whichever the formula you want to apply, you can apply, you will be getting the answer. But you have to be perfect for that. In order to get the perfection, what you have to do, in order to get the perfection, क्या करना है हमारे को? तो हमारे को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. The concept equations of motion. So before going to the equations of motion, हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड वर्क देखते हैं क्या है. आइए. Suppose this is the horizontal road or a horizontal line, horizontal motion we are discussing, right? तो ये एक horizontal road है, समझिए बेटा. तो यहाँ पे what I am considering is a body is there. Try to understand, one body is there, and this body is of mass m. It is moving with some initial velocity u. उसके पास initial velocity u है. So wherever you are seeing that you know in kinematics motion in a straight line, you जब भी देखेंगे बेटा, it is understood that that is the initial velocity of the body. In some problems, they mention the initial velocity of the body. They mention the initial velocity of the body, but in some problems, they say that the body starts from rest. So starts from rest means initial velocity is given indirectly. What is the initial velocity? The initial velocity is 0. It is starting from rest. Okay? So it is having the initial velocity u, and this object is moving with a constant acceleration, or I can say that this is moving with uniform acceleration. Uniform acceleration. This word is very, very important, students. Uniform acceleration. In order to apply the equations of motion, what we are going to study, the object, the body, the particle has to move with कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इसका एक्सेलरेशन चेंज होता है बेटा, तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लगा सकते हैं, ये आप लिख कर रख लीजिए. इफ द एक्सेलरेशन of the body changing, then we cannot apply the equations of motion. These equations of motion, what we are going to apply is applicable if and only if the object, the body or the particle is moving with a constant acceleration. ठीक है, चलिए ये चीज बहुत जरूरी है. The body is moving with constant acceleration and this body has covered a displacement s. कितना displacement गया बेटा? S is the displacement, and the same body, now it is here. Now it is observed that because it is accelerating, so the velocity will get changed. And now the final velocity of the body is how much? V. Final velocity of the body is V. Now the body has changed his velocity from the initial velocity u to the final velocity V. V is the final velocity. After covering a displacement s, then how much is the time? So let us consider to cover this much displacement,
how much is the time taken by the body? The time taken by the body is t. I hope it is clear. ठीक है, तो बेटा फिर से देख लीजिए, an object is there, a body is there, it is moving with initial velocity u, and it should move with uniform acceleration after covering a displacement s in time t. Now the velocity of the body is v. I hope it is clear. Now coming to the equations of motion. अब आइए बेटा मैं यहां पे लिखता हूं equations of motion. The first equation of motion. What is this first equation of motion? This is v is equals to u plus at. I'm going to explain one by one. No need to worry. The second one, s is equals to ut plus half at square. S is equals to ut plus half at square. The third one, v square minus u square is equals to 2as. Actually, at your school level, we study only these three. V is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus u square is equals to 2as, right? But in addition to these three, we have the, what I can say, the applicable part of these equations as two more equations. That is first, this is the fourth one, Sn is equals to u plus n minus half into a, and the fifth equation is s is equals to u plus v by 2 into t. Now beta, just these five equations are there, and complete kinematics. I am using the word complete kinematics. Try to understand my words. Complete kinematics means motion in a straight line and motion in a plane. We are not going to use any other formula except from this five. ये 5 पे ही आप जितनी मेहनत करेंगे, then you will be perfect in the two chapters, motion in a straight line as well as motion in a plane. I'm not going to use, you can check it, and I can prove that we are going to use only out of this 5 formula. चलिए अब हम देखते हैं one by one. देखिए बेटा, first equation you can see clearly, v is equals to u plus at. That is final velocity is equals to initial velocity plus acceleration times the time, right? So यहाँ पे आप कब यूज करेंगे this equation? Suppose the final velocity is asked, the body is moving. Try to understand, this body is moving with an initial velocity u, after time t, and moving with acceleration, uniform acceleration a. The body is starting its motion with initial velocity u, moving with uniform acceleration. I'm stressing the word uniform acceleration in time t. Then how much is this velocity after time t? Kitni velocity hongi? You have to go for this equation. S is equals to, v is equals to u plus at. The second equation, s is equals to ut plus half at square. देखिए बेटा, अब suppose like u is the initial velocity, right? This velocity will be given to you in time t, that is 5 seconds, 10 seconds. How much is the displacement covered by the body? कितना displacement होगा cover body का? That is given by this equation, that is governed by this equation. S is equals to ut plus half at square. And of course the third one, v square minus u square is equals to 2as. In this equation they may ask you acceleration, they may ask you the displacement. Anything can be asked by giving initial and final velocities. Now the confusion arises when to apply this formula, s is equals to ut plus half at square, and when to apply this formula, Sn is equals to u plus n minus half into a. This is the last part. Yeah, I think this is the simplest part I can say. आप इसको समझ सकते हैं बेटा कि भाई ये इनिशियल वेलोसिटी जब देगा, फाइनल वेलोसिटी देगा, और ये टाइम. एंड दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन है, मैं बाद में बात करूंगा. अब हमारा क्या है देखिए यहाँ पे डिस्कस करना, व्हेन टू यूज द इक्वेशन s is equals to ut plus half at square, and when to use Sn is equals to u plus n minus half into a. ठीक है, तो अब आइए इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूं बेटे आपके लिए. एग्जाम्पल, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज देयर. एक ऑब्जेक्ट है बेटा यहां पे. in 1 second it has covered this much distance or the displacement. सेकंड में यहां तक चले गया बेटा, थर्ड सेकंड में यहां तक गया, फोर्थ सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पे है, और 5 सेकंड्स में यहां पे है, फिर 6 सेकंड्स में यहां पर आ गया. ठीक है, सपोज, आई होप इट इज क्लियर. दीज आर द डिस्टेंसेस covered by the body in time 1 second, 2 second, 3 second. इस तरह से बॉडी आगे बढ़ रही है. ठीक है, तो when to use this equation and when to use this equation. बेटे पहले समझ जाइए, ये क्या है, जस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है.
इन टाइम t, इतने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। बट हियर मैं इसको जब पढ़ूंगा तो इसको कैसा पढ़ूंगा, डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा। तो इसको यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, मैं उसको पहले अवॉइड करता हूं। देखिए अच्छे से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज द क्वेश्चन आस्क्ड, आपको क्वेश्चन ये पूछा गया बेटा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना है आपको। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 3 seconds। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 3 seconds। 3 seconds मतलब अब आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू यूज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस अब आपको आएगा बेटा, यहां से लेकर यहां तक आएगा। मेरा वर्डिंग क्या थी याद है आपको, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 3 seconds। 3 seconds में कितना, मतलब टोटल 0 से लेकर 3 तक, ये यहां से। एंड विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज फॉर दिस, आई एम गोइंग टू यूज द सेकंड इक्वेशन। इफ सपोज थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के वर्डिंग चेंज करता हूं बेटा, सुनिए अब क्या क्या पढ़ रहा हूं मैं। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन थर्ड सेकंड। I hope it is clear. Third second. It is not 3 seconds. Third second. So third second means this is the first second, this is the second second, and this is the third second. तो अब इसको कैलकुलेट करने के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ ये कैलकुलेट करना है हमारे को। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड इन द थर्ड सेकेंड। Distance covered in the nth second is u plus n minus half into a. I hope it is clear for you and it's very much clear. तो हम यहां पे यूज करेंगे बेटा इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। What is the distance covered by the body in 6 seconds? What is the displacement or the distance covered by the body in 6 seconds? पूरे 6 seconds में कितना डिस्टेंस होगा बेटा, कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो 6 seconds मतलब पूरा यहां से लेकर यहां तक, पूरा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 seconds। 6 seconds टोटल। तो इसके लिए मैं यूज करूंगा सेकेंड इक्वेशन, टाइम विल बी गिवन एज 6 seconds। लेकिन यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं आपके लिए। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 6th second। देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं 6th second, मतलब आई एम स्पेसिफाइंग वन पर्टिकुलर सेकंड। 6th second मींस दिस द फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन, दिस इज द 6th one। तो ये मेरे को कैलकुलेट करना है। सो फॉर this is the distance covered in the nth second, displacement covered in the nth second। तो अब हम ये कौन सा यूज करेंगे बेटा, यहां पे इक्वेशन 4 यूज करेंगे। I hope it is clear. You have to be very much careful when you are applying this formula। ठीक है, चलिए coming to the fifth equation। What is this fifth equation? S is equals to u plus v by 2 into t। तो बेटा अब इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, आप ये इक्वेशन को गौर करिए और ये इक्वेशन को गौर करिए, इसमें एक्सेलरेशन मिलेगा आपको, इसमें भी एक्सेलरेशन है, राइट। दिस इक्वेशन इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज आल्सो द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। कंफ्यूजन कहां पे आएगा, ये दोनों में आएगा, वो तो अब आपको इंशाल्लाह अब नहीं आएगा, राइट। ये दोनों कब कैसा यूज करना है, अब ये कब यूज करना है, ये तो कंफ्यूजन की बात है, इट इज आउट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए इसमें एक्सेलरेशन है बेटा, इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है। तो व्हेनेवर एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन टू यू, डायरेक्टली यूज दिस इक्वेशन। I hope it is clear. The first question is displayed on the board. What is the first question here? You can see the first question, the displacement x of a particle. बेटा अच्छे से देखना है, the displacement x of a particle at the instant when its velocity is given by v is equals to under root of 3x plus 16। यहां पे दो क्वेश्चंस दिया हुआ है बेटा आपको, एक तो क्वेश्चन फाइंड आउट करना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड द सेकंड वन इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए अब आप। द फर्स्ट, अच्छा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ना बेटा, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है आपको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। v इज इक्वल्स टू u प्लस at, द सेकेंड वन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, the third one v square minus u square is equals to 2as, fourth one sn is equals to u plus n minus half into a, and the fifth one
s is equals to u plus v by 2 into t. These are the 5 equations we are going to work for that. चलिए अब ये इक्वेशन, ये दिस इक्वेशन, वॉट एवर द इक्वेशन इज गिवन नो स्टूडेंट्स, सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 16 एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी. तो जनरल इक्वेशन आई एम टेकिंग, आइए, this is what 3x plus 16 and this is given by what v. So v is equals to under root of 3x plus 16. तो बेटा अब मैं इसको स्क्वायर करता हूं दोनों साइड, बिकॉज इस इक्वेशंस में कहीं पर भी रूट नहीं है, आई डोंट हैव एनी रूट, राइट. तो मेरे को ये रूट हटाना है, तो in order to remove the root, what I have to do, square on both sides. So first what I am doing is squaring on both sides, squaring both sides. What it becomes, v square is equals to, यहाँ पे रूट कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ 3x plus 16 मिलने वाला है आपको, 3x plus 16, राइट. तो इफ आई टेक दिस, ये 16 को मैं ये साइड लाता हूं बेटा, जस्ट अरेंज कर रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं इसको इधर ला रहा हूं, राइट. तो -16 प्लस 16 यहां ला लिए, -16 एंड दिस इज व्हाट यू गेट, इट्स 3x. सो v स्क्वायर -16 इज इक्वल्स टू 3x वी आर गेटिंग. ठीक है, अब नहीं, ये इक्वेशन देखते हुए अब आप देखना है कि विच इक्वेशन इज एप्लीकेबल. तो इट इज समथिंग लाइक v स्क्वायर माइनस समथिंग इज इक्वल्स टू समथिंग x. तो बेटा द बेस्ट इक्वेशन व्हाट वी कैन यूज, द थर्ड वन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं बेटा, किससे कंपेयर करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. अब देखिए दिस वेरी सिंपल थिंग, दिस इज v स्क्वायर है, दोनों v स्क्वायर हो गया बेटा. ठीक है, अब u स्क्वायर की जगह पे क्या है जरा देखिए, इन प्लेस ऑफ u स्क्वायर वी आर हैविंग 16. और ना बेटे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट. देखिए यहाँ पे द क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट x इज गिवन, हमारे को पता है s इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अवर जनरल कॉन्सेप्ट. तो आई कैन से दैट दिस 2a इज इक्वल टू 3. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आया ये चीज, फिर से मैं बता रहा हूं, x is the displacement, x is also the displacement, that means 2a is equals to 3, u square is equals to 16. just compare कर रहे हैं, we are just comparing, u square is 16, 2as is 3x. तो ये x कैंसिल होगा, so this is what 2a is equals to 3 I have written. तो अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, u is equals to under root of 16 we can write. तो अंडर रूट 16 कितना होगा बेटा, तो u is equals to 4 units. 4 units हो गया, initial velocity is 4 units. The second part, acceleration, that is 3 by 2, I'm taking this down, so it will become 1.5 units. अब आप सवाल ये करेंगे सर यूनिट्स क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्टली यू कैन राइट मीटर्स पर सेकेंड, मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड, नहीं लिख सकते बेटा. इसलिए in the question they have not mentioned this problem is based on which units, whether it is CGS unit, SI unit, किस पर ये प्रॉब्लम बना गया, we don't know. So we cannot give centimeters per second, we cannot give meter per second. तो आप सिर्फ और सिर्फ units लिखेंगे बस. ठीक है, I hope it is clear, just please copy it fast. It's a very good question again. A particle starts moving from rest. देखिए बेटा यहाँ पे initial velocity is not mentioned, it's starting from rest. मतलब एक्सेलरेशन कुछ बात हुई, चलिए देखेंगे विच यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इट मींस इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ठीक है, चलिए एक चीज तो पता चल गई, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है बेटा. इट ट्रैवल्स ए डिस्टेंस x इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स. फर्स्ट 2 सेकेंड्स कितने, इट इज ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस x, पहले 2 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ बेटा, x. Next, and a distance y in the next 2 seconds, and we have to find the relation between x and y is. It's a very good question. चलिए आइए बेटा, आइए यहाँ पे देखिए, in the first 2 seconds, in the first 2 seconds, it is covering a distance how much, x, and it's very important to note initial velocity is 0. In the first 2 seconds, it is traveling a distance x, and a distance y in the next 2 seconds, मतलब और 2 seconds के बाद, और 2 सेकंड के बाद इट इज ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस y इन अगेन 2 सेकंड्स. तो ये दोनों x और y में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन हियर. तो इट्स वेरी सिंपल बेटा, देखिए अच्छे से देखना है, हमारे को इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, एज वेल एज
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन की भी बात हो रही है इस क्वेश्चन में, राइट? एक्सेलरेशन इज आल्सो गेटिंग डिस्कस्ड एंड टाइम इज डिस्कस्ड, तो विच इक्वेशन वी आर गोइंग टू यूज? अब मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई एम गिविंग 15 सेकेंड्स फॉर यू। इमीडिएटली आप मेरे को व्हाट्सएप पे रिप्लाई करिए कि भाई आउट ऑफ दीज 5 इक्वेशंस कौन सा हम यूज कर रहे हैं। चलिए, ओनली फॉर दिस टाइम, उसके बाद मैं खुद पढ़ूंगा। Just I would like to know how many of you are have understood the usage of or the application part. Wow, very good. All the students are replying correct, beta. Alhamdulillah, all the students are replying correct. So that is the second equation, s is equals to ut plus half at square we have to use. तो पहले वाले इस situation के लिए बेटा मैं ये यूज करता हूँ, s is equals to ut plus half a t square. So what is s? S is the displacement and it is x. ut, what is u? Initial velocity is 0. Our time कितना है बेटा? 2 है, plus half. What is acceleration? We don't know, but it is uniform. तो a रख दीजिए. और t square कितना है बेटा? What is this t square? Time is 2 seconds. So what I do? I'll take it as 2 square. Now x is equals to, this is 0. You leave it. So this is half. ये a बेटा, और ये कितना हो रहा देखिए, this is 4. 2 square it is 4. 1 times 2 times. So x is equals to 2a. X is equals to 2 into a, 2a. So suppose this is equation 1. तो x की वैल्यू मेरे को पता चल गई, x is equals to 2a. Now let us go for y. लेकिन y का जो डिस्टेंस जो कैलकुलेट हो रहा है बेटा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मिडिल। तो यहाँ पे वी डोंट नो व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इस पॉइंट पे हमारे को नहीं मालूम व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो कैन वी स्टार्ट फ्रॉम हियर? नहीं, अगेन वी हैव टू पीछे चले जाएंगे आप। इनिशियल वेलोसिटी 0, total displacement how much x plus y, try to understand because we don't know this velocity। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, पीछे जा रहे हैं। पीछे जाके अगेन इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट x plus y, total time is 2 plus 2 that is 4 seconds यूज करेंगे, ठीक है? So again I am using the same equation here also, s is x plus y, x plus y, इनिशियल वेलोसिटी 0 इनटू टाइम। टाइम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जैसा कि हम दोनों को डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड करें तो टाइम को भी ऐड कर देंगे। सो इट इज 4 प्लस हाफ। व्हाट इज ए? ए इज व्हाट? अगेन वी डोंट नो, इन यूनिफॉर्म है। चलिए टाइम कितना है बेटा, 4। 4 स्क्वायर आई एम राइटिंग डायरेक्टली 16। आई एम अवॉइडिंग वन स्टेप। टी स्क्वायर इज देयर नो, तो टाइम कितना है बेटा, 2 plus 2 4। 4 का स्क्वायर it is 16. So what we are having, x plus y is equals to, this part is 0 1 times and this is how much, 8 times. So this is 8a. So this is equation 2. So we need to calculate, क्वेश्चन देखिए, x and y का रिलेशन कैलकुलेट करना है। We don't want any acceleration, acceleration को हटाना है बेटा। What I do, the simplest method is equation 2 divided by equation 1. equation 2 को मैं equation 1 से डिवाइड कर रहा हूं, देखिए अच्छे से। What is this? x plus y, x plus y by, this is the equation 2. What is the equation 1? Equation 1 is x. Equation 1 is x is equal to, what is this side? It is 8a divided by, what is this? 2a. So a get cancelled 1 times and this is 4 times. So x plus y, x into 4, that gives you 4x. So y is equal to beta 4x. If I take this side minus x, so y is equals to 3x. So as per the question, what is the relation? What is the relation between x and y? The relation between x and y is equals to 3x. I hope you have understood this.